All right, we are live. Hello, hello, hello. Good evening and welcome back to the Law Entrance YouTube channel and to another session of the Hindu analysis. Today is 14th of August and 4 घंटे बाद हो जाएगा 15th of August. And क्योंकि हम 4 घंटे बाद लाइव स्ट्रीम पे नहीं होंगे तो एडवांस में वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. कुशाग्र ने ऑलरेडी जय हिंद लिख दिया है चैट बॉक्स में. सो यस, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू. भारत माता की जय टू ऑल ऑफ यू. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. चलो ठीक है, बढ़िया है. आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. आज की मेंटी का टॉपिक क्या है? आज की मेंटी का टॉपिक इंडिपेंडेंस डे ही है. सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. द थीम इज द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट फॉर टुडेज मेंटी. एंड स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है. Firstly, we'll have a newspaper overview, then we'll discuss couple of editorials, then Menti Quiz, then उसके बाद CLAT का strategy session. So a lot on cards today, but yeah, let's begin without wasting any more time. चलो, सब लोग आ गए स्ट्रीम पे? अभी सब लोग आए नहीं हैं, but I'm hoping with time सब लोग आ जाएंगे. कुशाग्र सिंह, वाईटी चैट में इंडिया का फ्लैग का इमोजी नहीं है. फोन में तो होगा आपके. फोन से भी स्ट्रीम ज्वाइन कर लो और फोन से जो है इमोजी डाल दो. चलो ठीक है. गुड इवनिंग टू एवरीवन. हेलो, गुड इवनिंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको. चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. लेट मी जस्ट क्विकली ओपन द न्यूज़पेपर फॉर यू ऑल. जस्ट गिव मी वन मोमेंट. अरे यार, आज का न्यूज़पेपर कहाँ गया? वेट अ सेकंड गाइस. ऑल्सो आज जो है हो सकता है, लाइक आई होप नॉट, बट हो सकता है दैट देयर माइट बी सम इंटरनेट डिसरप्शन क्योंकि आज जो सुबह से वाईफाई इज एक्टिंग अ लिटिल चॉपी बिकॉज मॉनसून, बिकॉज खराब मौसम. सो मैं भी चैट बॉक्स पे नज़र रखूंगा एंड जैसे ही कुछ ऊपर नीचे हो तो मुझे प्लीज़ आप लोग बता दें. पता नहीं जिस दिन मेंटी करना होता है उसी दिन हमारा नेटवर्क ख़राब कैसे हो जाता है. बट it is what it is. So fair disclaimer, there might be some disruption today, but I'll hope that there is not. Okay, चलो. अभी तक I hope I am audible, visible, PPT visible, सब कुछ फर्स्ट क्लास है. एक जल्दी से yes लिख दो चैट बॉक्स में if I'm audible, visible, PPT is visible, so that I have a quick check-in and then we'll start. Yes. ओके, ठीक है. थैंक यू. लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन. द हिंदू न्यूज़पेपर. सबसे पहले ऐड आ गया है. इंडिपेंडेंस डे की सेल आ गई है. नाइस. गवर्नमेंट tweaks export plan as US ups the trade ante. Now this is related to making changes in the sectors which have been hit by the tariffs, like the textile sector, like the chemical sector, like the pharma sector, etc. एंड अब जो है, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के एक्सपोर्टर्स, उनको थोड़ी सी क्रेडिट गारंटीज गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से दे दी हैं. थोड़े से क्लियरेंसेस उनके तेज कर दिए हैं, उनको थोड़े से इंसेंटिव दे दिए ताकि जो इम्पैक्ट है ये जो टैरिफ इम्पोजिशन है 50% वाला, वो इम्पैक्ट थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए. ठीक है. ब्रेसिंग फॉर इम्पैक्ट, यू कैन सी गवर्नमेंट इज tweaking its export promotion mission to target the sectors that would be most likely to be worst affected, like organic chemicals, machinery, textiles, etc. तो इसमें यही है, there is an allocation of 2250 crore for the current financial year, जिसके थ्रू ये क्रेडिट्स दिए जाएंगे, लोन्स दिए जाएंगे MSME सेक्टर्स को. ओके, राइट इन साइड पे यू हैव thousands of forest rights titles vanish in Chhattisgarh, records just in India things. तो बेसिकली यहाँ पे हुआ ये है कि काफ़ी सारे जो फॉरेस्ट राइट के टाइटल्स मतलब कि किसका वो एग्जैक्टली लैंड है, गवर्नमेंट का है, किसी आदमी का है, ट्राइबल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का है, किसका वो लैंड है, उसके टाइटल्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गायब हो गए हैं. तो अब किसी को नहीं पता वो ज़मीन किसकी है. 2788 इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स titles have gone missing in Bastar district. 50% of community forest resource titles in Rajnandgaon reduced within a month last year. एंड यहाँ पे जो एक्ट रेलिवेंट है वो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो रिकॉग्नाइज करता है राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज टू यूज द फॉरेस्ट. ठीक है जी, आगे चलते हैं. 3 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू टेक अप कम्युनिटी डॉग्स वाला इशू टुडे. तो कल के न्यूज़पेपर में हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, तो हम फिर उसको मंडे को
डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कल तो आई थिंक आपकी क्लास नहीं होगी, इंडिपेंडेंस डे है, तो इट वुड बी अ नेशनल हॉलीडे। आप लोग भी एक दिन आराम करो, मैं भी एक दिन आराम करूंगा, देश की आज़ादी का जश्न मनाएंगे। Next, we have undocumented migrants leaving via eastern border tripled in 2025. Eastern border मतलब बांग्लादेश, म्यांमार, etc. ठीक है, इनका नंबर बढ़ता जा रहा है। City based news will skip. State based news में politics we can skip. 40 Thakur legislators announce formation of Kutum Parivar. Okay. No meet on Independence Day. CM hits back at opposition, cites शरद पवार एरा ओरिजिन ऑफ ऑर्डर। एक तो पता नहीं देश में आजकल ये क्या ट्रेंड चल गया है, हाइपर विजिलेंटिज्म का, वेजिटेरियनिज्म को लेके। भाई जिसको खाना है जो वो खाने दो, इस दिन नॉनवेज नहीं देंगे, उस दिन नॉनवेज नहीं देंगे, ठीक है, जैसा पॉलिटिक्स चले चलती रहे। Okay, a research scholar refuses to receive degree from Tamil Nadu governor at convocation. Wow, that's interesting. Since the governor has done nothing for the Tamils and Tamil Nadu and is working against the state, I chose to receive the degree from Dr. Chandrasekhar, a scholar, instead of भाई साहब क्या क्या लोग करते हैं क्लाउड के लिए, बट ठीक है। मराठी आउटफिट प्रोटेस्ट एट कबूतरखाना मलिंग कंट्रोल्ड feeding. Bombay Municipal Corporation tells I quote. ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, we can skip this. Gujarat teen killed for live-in relationship cleared NEET. Okay. Wow. She was allegedly killed by her father, but now she has cleared NEET. Okay. सब आप लोगों को पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए जान भी देनी पड़ सकती है। That are the stakes. Those are the stakes. Will remove adverse remarks if all trees are replanted, says Supreme Court. तो ये चीफ जस्टिस साहब ने तेलंगाना गवर्नमेंट को बोला है। This is regarding the whole वही कंचा गच्चीबावली फॉरेस्ट एरिया वाला केस, जो हैदराबाद के पास एक फॉरेस्ट है जिसपे जो है गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन करना चाह रही है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी है। They're saying where trees were felled for an IT park, state's proposal must balance development and sustainability. Okay, बाकी तो सब crime based news, politics based news ही है। All right, ठीक है, आगे चलते हैं। ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, नई न्यूज़ है। India's first private constellation of Earth observation satellites under PPP model to be set up. What is PPP model? Can anyone tell me in the chat box? PPP model किसको कहते हैं? ये हम डिस्कस करेंगे on the PPT थोड़ा सा in detail कि what exactly is happening here. आगे चलते हैं। I think now we are moving towards the editorial section. Yes, we are. The ceding of academic freedom in universities. ये आर्टिकल हमने कई बार डिस्कस किया है, ये टॉपिक हमने काफ़ी बार डिस्कस और डिबेट किया है, तो बहुत ज़्यादा तो इसमें मैं नहीं जाऊँगा डिटेल में, बिकॉज इट्स already been discussed multiple times. The academic freedom and जो आपको freedom of speech देनी चाहिए यूनिवर्सिटीज में वो नहीं मिल रही है. That is, I mean, the one line summary of it. इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नई insights नहीं है. It is harming the teaching learning process while stifling thinking and creativity in research. In the long run, the economy, society and polity will be the losers. Left-hand side पे you have Lieutenant Governor's nominations without government nod could affect J&K's electoral process. कौन से nominations की बात हो रही? Nominations to the Legislative Assembly, members to the Legislative Assembly. अब इसमें government का nod नहीं मिला है तो इससे electoral process affect हो सकता है. That is what this article says. अब इसके क्या जो है consequences होंगे? They are saying consequential decisions like nominating members who have voting rights in an elected assembly must flow from a democratic mandate, not administrative discretion. ठीक है, High Court's constitutional question could not be more direct. कि 2023 के जो amendments हैं the J&K Reorganization Act, do they allow the Lieutenant Governor to nominate 5 assembly members which have potential of converting the minority government into a majority government and vice versa? तो all in all कहना ये चाह रहे हैं, अब देखो मान लो let's say there are 10 members in the Legislative Assembly hypothetically. अब उसमें से अगर 5 लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वही अपॉइंट कर देंगे,
और मान लो एक दो उनके पार्टी के पहले से भी हैं, तो 7 लोग 10 में से किसके हो गए? एक तरीके से एक ही पार्टी के हो गए, विच डज नॉट हैव द मेजोरिटी कंसेंसस ऑफ द पब्लिक। पब्लिक ने वहां पे 2 ही रिप्रेजेंटेटिव भेजे 10 में से, लेकिन 5 फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के आ गए, तो 10 में से 7 जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक तरीके से फेवरेबल वाले रिप्रेजेंटेटिव हो गए, which sort of goes against the basic structure of the Indian Constitution, which talks about democracy, which talks about representation of people. They are saying rather than addressing this, the ministry delves into legal technicalities. The submission argues that nominations fall outside elected government's remit, seemingly invoking this judgment. And ठीक है, बाकी ये legal technicalities में आपको जाने की जरूरत नहीं। All right, ठीक है। A war game changer in a battle for influence in Asia. ये हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ये कौन से वॉर की बात कर रहे हैं हम? ये अर्मेनिया और अजरबैजान वाले वॉर की हम बात कर रहे हैं, जो उनका नगोर्नो कराबख कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। दैट विल डिस्कस इन लिटिल मोर डिटेल, ऑब्वियसली इन कॉन्टेक्स्ट विद जियोपॉलिटिक्स between India and China, between India and Pakistan, between India and US, between Israel, etc., etc. तो multiple perspectives से जो है we are looking at different geopolitical conflicts and how we have now engaged in a battle for influence in Asia. Left hand side पे you see a temporary blip in inflation will help but not by much. तो ये कल जो न्यूज़ आई थी हमें कि retail inflation is at an all time low, उसी के अराउंड ये है कि उससे बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी आप लोग पढ़ सकते हो, मोस्टली इसमें नंबर्स ही दिए हुए हैं। Africa is challenging China's mining hegemony. This also will discuss on the PPT. These are the 3 articles which will discuss on the PPT. एक वो सैटेलाइट्स वाला, एक ऊपर ये एशिया में जो वॉर्स चल रही है उसके वाला, और ये China's mining hegemony वाला। These are the 3 topics on today's agenda. आगे चलते हैं। Record violence marks Israel's push towards West Bank annexation. This we all know, we have been following this, nothing new, just stats and numbers. How can SCST scholarships be expanded? Let's see the gist of this one. The Ministry of Tribal Affairs is looking to raise parental income to 4.5 lakh for post and pre-matric ST scholarship. Matric मतलब 12th class. And income limit जो है बढ़ा के 4.5 लाख कर दी जाएगी, यानी कि जिनकी इनकम 4.5 लाख से कम है वो लोग बेनिफिशियरीज बन पाएंगे इन स्कॉलरशिप्स के। ठीक है, अभी जो है इनकम लिमिट आई थिंक थोड़ी सी कम है, 2.5 लाख है, तो जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है वही जो है इन स्कॉलरशिप्स का बेनिफिट ले सकते हैं, जो एसटी और ट्राइबल्स के स्कॉलरशिप्स होते हैं। बट अब इसको थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है ताकि मोर पीपल कैन बी बेनिफिटेड। Data from earlier this year showed that pre-matric scholarships for OBCs, EBCs, OBC मतलब other backward classes, EBC मतलब economically backward classes, and DNTs मतलब denotified tribes. The beneficiaries dropped from 58.62 lakhs in 2021 to a little over 20 lakh in 2023. मतलब almost like 1/3 हो गए beneficiaries. House panels have stressed the importance of these scholarships and observed that the existing parental income limit was too low. यानी कि लोग क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे फिर। ठीक है, अब ये स्कॉलरशिप जो है दीज आर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कुछ हिस्सा इसमें सेंटर डालता है, कुछ हिस्सा इसमें स्टेट डालता है। यहाँ पे द स्प्लिट है 60-40 रेशियो। यूनियन गवर्नमेंट वुड पुट 60% ऑफ द फंड्स, स्टेट गवर्नमेंट विल पुट 40% ऑफ द फंड्स। नॉर्थ ईस्ट में जो है यूनियन गवर्नमेंट 90% डालती है, स्टेट गवर्नमेंट 10% डालता है। एंड ये स्कॉलरशिप्स बच्चों की पढ़ाई के लिए दी जाती है फॉर 1st to 10th ग्रेड। ठीक है, बाकी तो हमने पढ़ ही लिया। Why does the US president want Intel's CEO to resign? ये important तो नहीं है हमारे लिए, बट हम जिस पढ़ लेते हैं। Donald Trump singled out Intel CEO Lip Butan on Truth Social, which is the social network which Trump sort of operates on, क्योंकि Twitter से तो वो banned है, X से। The CEO of Intel is highly conflicted and must resign immediately. There is no other solution to this problem. Reuters reported that Mr. Tan had made investments in Chinese companies. Of particular note is Mr. Tan's investment in Semiconductor Manufacturing International Corporation. On 7th August, Intel published a statement defending the company, its board of directors and Mr. Tan. Basically, China में invest कर रखा है तो जो है प्रॉब्लम हो रही है ट्रम्प भाई साहब को, links with Chinese companies. ओके, आगे चलते हैं। मिलिट्री बायोग्राफी इज अ मैटर ऑफ हीरोज एंड ओवरलैपिंग हिस्ट्री। ठीक है, आज काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे हम हिस्ट्री पे।
in the quiz. Jaishankar to visit Russia. Wang Yi to reach Delhi. Who's Wang Yi? Can anyone tell me? जल्दी से वांग ही कौन है? चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है. चलो मैं बता देता हूँ. India is going to step up engagements with China and Russia, and this comes under US tariffs की uncertainty. China will likely to continue border talks during Wang's visit, and the latest update is that India and China are also planning to resume their proper bilateral trade after 5 years. एंड ट्रम्प भाई साहब ही जो है ये चीज़ कर सकते थे. आई डोंट थिंक इंडिया चाइना को इस तरीके से अभी तक कोई भी चीज़ या कोई भी इवेंट यूनाइट कर पाया जितना डोनाल्ड ट्रम्प ने यूनाइट किया है. सो ब्लेसिंग इन डिसगाइज कह लो आप एक तरीके से. 2 soldiers killed along LOC in Baramulla, says army. ओके, मैं एक बार चैट बॉक्स चेक कर लूँ. मेरी आवाज़ पहुँच रही है ना आप लोगों तक? बीच में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? ठीक है, ओके, अभी तक तो सब सही है. आगे चलते हैं जल्दी से. गैलेंट्री अवार्ड्स सेट टू बी अनाउंस्ड फॉर ऑपरेशन सिंदूर सोल्जर्स टुमारो 15th अगस्त, इंडिपेंडेंस डे. कल जो है गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए जाएंगे. 5,000 special guests invited for the 79th Independence Day celebrations at Red Fort. Bihar SIR, a battle between Election Commission's powers and citizens' right to vote. We already know this. Rahul Gandhi to lead Vote Adhikar Yatra in Bihar as Congress intensifies the fights against SIR. Okay, this is all politics. Many reject plastics treaty draft that permits curbs on production. तो ये हमने कल परसों ही डिस्कस किया था. Like there are two coalitions, one which is advocating for curbing the current plastic waste, and one which is advocating against more production. तो वही है कि polymers, microplastics जो कंट्रीज बनाती हैं, जो कंट्रीज मैन्युफैक्चर करती हैं, वो उस चीज़ के अगेंस्ट हैं. द करेंट वर्जन receives support from the Indian delegation, and petrochemical producers like Kuwait. About 80 member states expressed disappointment, with some saying that the text should not be used as the basis of talks. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में कल की क्लास में, कल या परसों की क्लास में. Supreme Court issues notice to center on plea for creamy layer like system in SC/ST reservation. Creamy layer मतलब एक income cap जैसे OBC reservations में होता है, that there is a creamy layer कि इससे ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो आप एक क्रीमी लेयर में आ जाओगे ना, आपको ओबीसी रिजर्वेशंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर वालों को मिलेगा. तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नोटिस इशू किया सेंटर को दैट SC/ST रिजर्वेशंस के लिए भी एक क्रीमी लेयर जैसा सिस्टम बनाया जाए. एंड दिस वुड बी अ वेरी मेजर चेंज अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो. वेरी रेडिकल चेंज इन द रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. बहुत ही लैंडमार्क चेंज होगा जिसको हम फॉलो करेंगे. इनकम्बेंट रूडी बीट्स बलियान इन कीनली कंटेस्ट. दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट. US not India is tariff king, says Amul MD. ठीक है जी. India maintained a uniform 30% import duty on all dairy items. US imposed a steeper 40 to 75% on products like ghee, butter, cheese. तो ये कोई तारीफ वाली स्टेटमेंट नहीं है, ये कॉन्डिसेंडिंग स्टेटमेंट है एक तरीके से कि यूएस कहता रहता है कि इंडिया बहुत टैरिफ लगाता है, बहुत टैरिफ लगाता है. तो ये अमूल के हमारे जो MD साहब हैं जैन मेहता, इन्होंने बोला है कि हम नहीं है टैरिफ के किंग, यूएस है टैरिफ का किंग, हमसे ज्यादा टैरिफ लगा रहा है यूएस. ओके, आगे चलते हैं. ठीक है, नथिंग इम्पोर्टेंट हियर फॉर यू गाइस. Netanyahu floats letting Palestinians out of Gaza. Israel is intensifying the attacks, drones and explosive munitions, says Gaza Civil Defense. 33 killed in enclave on Tuesday. Myanmar Junta committing systematic torture, says a report by UN investigators. Okay. ठीक है, ठीक है, ठीक है. स्पोर्ट्स में देख लेते हैं if there is anything interesting. New Grandmaster for India, Rohit Krishna, India's 89th Grandmaster. 88th Grandmaster कौन बने थे इंडिया के या कौन बनी थी इंडिया की? Rather, that's the hint. Can you guys quickly tell me who's the 88th Grandmaster of India? अभी recently ही हमने डिस्कस किया था. Kabir's pep talk takes Akash to new heights. Okay, Jamil parts ways. ठीक है. Nothing important here. Nothing important here.
All right, that's the newspaper for the day, folks. We'll come back to our PPT and discuss the three editorial articles in a little more detail. Divya Deshmukh is the right answer. Absolutely correct. Good job. Yes, the Janta regime is the military rule. Chandralekha, absolutely right. Yeah. Okay, ठीक है. Let's carry forward with the PPT jaldi se, and then we'll do the Menti Quiz, which is the Independence Day special, and then we have an elite strategy session as well. Let's go. The पहला article is regarding India's first private constellation of Earth observation satellites under a public-private partnership model to be set up. तो क्या सीन है ये? The Indian National Space Promotion and Authorization Center, short में InSpace, ने अनाउंस किया the selection of Pixel Space India led consortium to design, build and operate इंडिया का पहला indigenous commercial Earth observation satellite constellation, यानी multiple satellites under the PPP model. Bangalore-based Pixel Space India comprises of three आप कह सकते हो offshoots या branches या companies: Pearside Space, SatSure, Analytics India, and Dhruv Space. InSpace said that Pixel Space India consortium was selected by a competitive bidding process. First time in Indian history and India's space sector that a private consortium would invest more than 1,200 crores over the next 5 years to launch a constellation of 12 satellites, which are state-of-the-art Earth observation satellites. And ये जो constellation है, जो group of satellites, so this would deliver analysis-ready data and value-added services for applications in climate change, disaster management, agriculture, marine surveillance, national security, urban planning, and also cater to the global demand of high-quality geospatial intelligence. यानी कि अर्थ के बारे में intelligence. InSpace said that by generating high-resolution satellite data, the initiative will reduce India's reliance on foreign sources and ensure data sovereignty. Initiative signals the coming of age of India's private space sector, demonstrates the capability of Indian companies to lead large-scale, technologically advanced and commercially viable space missions, said the chairman of InSpace, Pawan Goenka. तो ये वन लाइनर आपको पता होना चाहिए कि चेयरमैन कौन है InSpace के. इट्स पवन गोयंका. अब ये जो इंक्वायरी कमेटी इनकी बनी है, इसमें like this would have a single window independent nodal agency that functions as a autonomous agency in the Department of Space. This is called Indian National Space Promotion Authorization Center. Basically एक कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी आप कह सकते हो ये पूरे प्रोजेक्ट को. Department of Space क्या है? Department of Space was formed following the space sector reforms to enable the participation of private players, and it was established as a part of space sector reforms of 2020 to enhance the private sector participation and strengthen India's space economy through PP collaboration. To manage dedicated venture capital fund for space startups to foster innovation, build a vibrant space ecosystem in the next 5 years. ठीक है, awesome. The next article, a war game changer in a battle for influence in Asia. So this sets context with the Nagorno-Karabakh conflict which happened in Central Asia in 2020, and उसके साथ जो है drones का involvement start हो गया था. Drones became a central sort of way of attacking after this particular conflict. फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा that unmanned aerial vehicles, UAVs and UCAVs were used and they became instrumental in precision strikes. उसके बाद now India is trying to upgrade and modernize its military, and हमने order कर लिए 31 MQ-9B Reaper from United States, including Sky Guardian and Sea Guardian models, which would guide and guard our territories, border territories with Pakistan and China and high altitude regions. And we need high altitude surveillance, large fixed wing, long range systems that can deliver significant payloads during strikes, and small cost effective systems for precision strikes. Now, coming back to the conversation regarding these UAVs, we can also look at US, China, Turkey, and Israel. India finds itself trying to fill these gaps in its arsenal through imports, joint ventures, and domestic production, mostly relying on Israel and European countries. And given our ties with China and Turkey at the moment, India is unlikely to rely on these for critical defense technology, क्योंकि ये चार जो हैं, these are champions of drone warfare. Number of countries including Vietnam, Philippines, Taiwan, South Korea, and Japan have relations with China that can only be described as strained as bet. मतलब बढ़िया relationship नहीं है. Beyond just producing everything domestically, like-minded countries in Indo-Pacific would further mutual interest and foster trust-based relationships in a region becoming increasingly polarized. यानी कि people are taking specific sides and tensions are increasing.
अब ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें तो जैसे ताइवान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, दे हैव देयर ओन कंपनीज एंड जाइंट्स, जैसे TSMC है, सैमसंग है, दिस इज टेंसेंट आई गेस, if I'm not wrong. There is Naura Technology, which account for over 70% of global market share. US is home to chip design and R&D giants like Intel and Qualcomm. And Europe usually focus करता है automotive applications वाली specialty chips पे, हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। ये कल के आर्टिकल से तो नहीं आ गया, इसी आर्टिकल का पार्ट है ना ये, कल के आर्टिकल से आ गया ये, आई थिंक सो, या okay, so wrong slide. Anyway, moving to the last article of the day. Africa is challenging China's mining hegemony. What is this article about? अब चाइना जो है माइनिंग में और माइनिंग क्रिटिकल मिनरल्स स्पेशली में, इट्स ट्राइंग टू बिकम अ सुपर पावर. इट इज ट्राइंग टू टेक अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी ऑन लीज, लॉट ऑफ माइंस ऑन लीज, एंड टेक कंट्रोल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्रिटिकल रिसोर्सेज जो है चाहे वो चाहता है कंट्रोल कर ले. इन द पास्ट 2 decades it has entrenched itself as a dominant actor in Africa's mining sector. But now sides are changing. Tide is beginning to turn. New wave of resistance is coming by increased scrutiny from African governments as well as civil society activism, which is challenging China's long-standing dominance in Africa's mining industry. क्यों? क्योंकि Chinese firms have failed to deliver promised skills transfer or infrastructure. And उस वजह से African nations are growingly asserting their rights to value-based development, value-added development. Old model of raw resource extraction in exchange for infrastructure investment is no longer tenable in a region demanding agency, accountability, and economic sovereignty. तो पहले चाइना क्या करता था कि भाई आपका जो ये माइंस हैं ये सारी हमें दे दो, हम आपका रेलवे बना देंगे, हम आपके एयरपोर्ट बना देंगे, हम आप में इन्वेस्टमेंट कर देंगे. अब वो उनके लिए काफ़ी नहीं है. वो कह रहे हैं ना, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, अब हमें चाहिए फुल इज्जत. अब हम वो अफ्रीका नहीं रहे जो लिबर करते हैं. ठीक है, ठीक है. Africa is home to some of the world's richest reserves of critical minerals. We all know that DRC alone produces 80% of world's cobalt. DRC is a pretty huge country in Africa. I think top 5, top 7 में होगी in terms of size. And it's a mineral. Cobalt is a mineral which is indispensable for rechargeable batteries. And now everything moving towards, battery powered and EVs. So this becomes very important. China controls 80% of this output through long-standing agreements like the Sino-Congolese Des Mines deal, also called Sicomines deal, which granted Chinese firms mining rights in exchange for infrastructure projects. लेकिन जो local Congo के लोग हैं उनको benefits नहीं हो रहे, and the benefits are disproportionate to the mineral wealth extracted. According to Civil Society Coalition, Congo is not for sale. Tax exemption granted to Chinese companies cost DRC approximately $132 million in 2024 alone. And across Africa, Beijing's once unquestioned mining dominance is now being scrutinized closely for a transparent partnership. The newfound assertiveness by African governments, who are no longer content to act as passive partners in resource exploitation. चाइना अभी भी अफ्रीका का लार्जेस्ट माइनिंग पार्टनर है, लेकिन फ्यूचर डोमिनेंस गारंटीड नहीं है. एक शिफ्ट आ रहा है वेयर अफ्रीकन नेशंस आर रीअसर्टिंग देयर सॉवरेनिटी ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज. ऑसम. ठीक है, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज एनालिसिस पार्ट. लेट्स लुक एट द वोकैब फॉर द डे. द फर्स्ट वर्ड इज पैरोक्सिज्म. पैरोक्सिज्म मतलब होता है एक एकदम सडनली आपके कोई इमोशंस टेक ओवर कर लेना, सडन अटैक और वायलेंट एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इमोशन और एक्टिविटी. जैसे अचानक से गुस्सा आ जाना, अचानक से सैड हो जाना, दैट इज पैरोक्सिज्म. In a sudden paroxysm of jealousy, she threw her clothes out of the window. Outburst, agony, gust are synonyms. Scuttled is the next word. Scuttled का मतलब होता है कि ऐसे दुक्के फटाफट भाग के जाना. Run hurriedly or furtively. Furtively मतलब in a hiding sort of a way with short, quick steps. तो बेसिकली जब आप रात को किचन से स्नैक्स चुरा के लाते हो बिना मम्मी पापा को पता लगे, दैट इज वेयर यू आर scuttling. Two very small children scuttled away in front of them. Crawled, crept, poked. Those are antonyms. Scamper, scurry, scramble are synonyms. And the last word is revel. Revel मतलब होता है मस्ती, party, enjoy in a lively and noisy way, especially with drinking and dancing. Celebrate, make merry, have a party. Basically what you would do once you all get to good national law universities. They spent the evening reveling with their guests, is the statement. And that brings us to the end of vocabulary. Revel means enjoy, scuttle means running hurriedly in short steps, and paroxysm means
a sudden violent expression of a particular emotion. And that sums up the Hindu analysis for the day, but not the session, because it's time for the Independence Day special Menti Quiz. And for people who don't know what is Menti Quiz is a quiz which we do every Tuesday and Friday, MCQ based quiz done on a platform called menti.com. सो आप लोग को जाना है www.menti.com पे, एंड मैं आपको एक कोड बताऊंगा, आपको वो कोड वहां पे डालना है, एंड यू वुड बी एबल टू एक्सेस माय क्विज. द कोड फॉर टुडेस क्विज इज 86252271. 86252271. चैट बॉक्स में भी लिख देते हैं 86252271. ओके, मॉक्स की बातें चल रही हैं चैट बॉक्स में बहुत सारी. ठीक है, जल्दी से आ जाओ क्विज पे. आई विल ऑल्सो शेयर द स्क्रीन. Oh, I welcome to the Independence Day GK quiz. This is the code 86252271. Let's see how many have joined. Do we have 35 people today? I want at least 35 people. Come on. We have 45 on the stream. Jaldi join kar lo. You guys need to go to www.menti.com and put in the code which you can see on your screen, 86252271. Actor Darshan arrested as Supreme Court cancels bail. Pata nahi yaar, I did not follow that news. Not sure. Can't verify. Okay, we have 38 players. Nice. Can we do 40? Can we do 40 players? I'll wait for 10 more seconds. 10. Arey, 37 ho gaye. Crazy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 39 हो गए. 1.75, 1.5, 1.25, 1.20. Yeah, what is this behavior? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. In 3, 2, 1, let's go. Let's go to the first question. I think I saw 41 people while I just pressed the next button. The first question for you guys on your screen, Independence Day special quiz. "16 people got this right." I suppose that this would be an easy question, but apparently not. Pengali Venkaya gets the credit for designing the current Indian national flag, which was adopted in 1947. कोई मुझे exact date बता सकता है? When was the Indian national flag, the latest one, adopted? When did it come into use? जल्दी से chat box में, while we look at the leaderboard. Can anyone tell me the date? किसी को नहीं पता डेट? It's 22nd July. That's correct. 22nd July. That's right. Okay, Shakespeare had the fastest response. Vriddhi is second. Snippety is third. Friendly Neighborhood Kushagra is fourth. Wow. Caramel Popcorn is fifth. Then we have Cinderella. Then we have Generalissimo Chiang Kai-shek. Quite a name there. And we have Siddhi, Ashim and Chandralekha. All right, let's go to the second question. जिसके लिए सबको मिलते हैं 1000 points. Make sure you don't miss out on this one. Second question coming up in the Independence Day special quiz. Here we go. Oh, only 15 people got this right. थोड़ा सा tricky question था ये. Because the thing is that INA was founded by Captain Mohan Singh.
I think in 1941 or 42, and then it was revived by Subhash Chandra Bose in the next year, 1943, I suppose. So yeah, he did not, conceptualize the INA. He revitalized the INA. आप ऐसे कह सकते हो, Subhash Chandra Bose. The founder was Captain Mohan Singh. ओके, देश रंगीला रंगीला, क्या बात है, क्या तो नाम है. चलो 10 सेकंड लो सब लोग, जो है कुछ ऐसा बढ़िया सा देशभक्ति टाइप नाम रख लो, मजा आएगा. Let's just make this properly Independence Day theme. I'll move to the next question while you guys have renamed yourself. अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो कर लो, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है. वृद्धि comes to the first spot, Snippety second, then we have Siddhi, Ashim, Aradhya, Priyanshi, Phoenix, Ted, Cake, and Des Rangila Rangila. All right, with that, let's move to the third question. 40 players playing with us. Third question in the Independence Day quiz. Here we go. 3, 2, 1. Easy question, I suppose. The right answer is Anand Math. That is the literary work from which our national song Vande Mataram has been taken, penned by Bankim Chandra Chatterjee or Chattopadhyay. Both the surnames are used. ठीक है, आगे चलते हैं. Let's look at the leaderboard. Okay, interesting. Vridhi maintains the lead. Ashin climbs up to the second spot. Siddhi on third. Aradhya on fourth. Priyanshi on fifth. Snippety, Shakespeare, Phoenix, and Generalismo and Friendly Neighborhood Kushagra also on the leaderboard. Let's go to the next question. Question number 4 out of 16. Coming up for you all. In 3, 2, 1, let's go. It is Michael O'Dwyer, the British official who was assassinated by Sardar Udham Singh in London in 1940. It's not Reginald Dyer, it's Michael O'Dwyer. It's not Lord Irwin or Lord Hardinge. And these two guys were different. A lot of people think that he was the same guy who ordered the shootout in Jallianwala Bagh massacre. But no, he was not the person who gave that immediate orders in that premises. He was the one who supervised that person. और he was the head, आप कह सकते हैं एक तरीके से. Okay. Okay, Ashim takes the first spot. Then we have Vridhi, Siddhi, that rhymes. Aradhya, Priyanshi with the fastest response. All first 5 are very close. All second, 5th से लेके 10th तक people very, very close. This is an intense matchup this time. 5th question, let's see how many of you can crack this one. Coming up in 3, 2, 1. Ilbert Bill controversy. It is allowing Indian judges to try Europeans. तो ये इल्बर्ट बिल करके बिल लाया गया था. I think Lord Irwin थे उस time पे, not very sure, but I think so. And this bill created a lot of controversy because obviously Britishers were not okay with Indian judges trying white people or Europeans. So yeah, that is what the controversy was around. Okay, I can see a shuffle happening with this question. Big shuffle. Ashim maintains the first spot. Priyanshi climbs on the second one. Then we have Shakespeare with the fastest response on third. Vridhi, Snippety, Siddhi, Chiang Kai-shek, Phoenix, Aradhya, and Ted makes entry to the leaderboard. Let's go to question number 6, folks. Question number 6 of this Independence Day quiz on your screen now. Only 12 people got this right. See, thoda sa tricky question tha ye. I did not ask you the first Indian woman. I asked you the first woman.
And the first woman was Annie Besant in 1917. She presided over the session of Indian National Congress. अगर आपसे फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछता मैं तो सही आंसर होता सरोजनी नायडू. She was the first Indian woman to preside over the session. So, psych. Okay, let's see who all navigated the trap successfully. काफी सफल होंगे इस क्विज में मुझे लग रहा है. Ashim is slowly gathering a lead. Snippety with the fastest responses on second. Then we have Phoenix, Journalismo, Priyanshi, Shakespeare, Riddhi, Ted, Siddhi, and Aradhya. All right, let's go to the seventh question of this quiz. Coming up for you all in 3, 2, 1. Let's go. Winston Churchill is not the right answer. It's Clement Attlee, who was the British Prime Minister during the time of Indian independence. A lot of people think it's Winston Churchill, but it's not. It's Clement Attlee. That's the right answer. Okay. फिर से काफी सारे shuffles. Ashim, Snippety, Phoenix, Priyanshi, Shakespeare, Ted, Aradhya, Journalismo. Karthikeya is back on the leaderboard with the fastest response, and Vidhi is also there. Okay, let's go to question number 8. We are halfway there into the quiz. 40 people playing with us. Let's go. In 3, 2, 1. Next question. Most of you got this, right? This was an easy question. The Jallianwala Bagh massacre of April 1919. Hunter Commission was made to investigate this massacre. Absolutely right. Chandralekha makes her entry to the leaderboard with this right answer. Phoenix climbs to the second spot. Ashim maintains the lead. Snippety is on third. Priyanshi, the fastest response, on fourth. Shakespeare, Journalismo, Ted, Chandralekha, Aradhya, Karthikeya on the leaderboard. Let's go to the next question. Question number 9. Coming up for you all in 3, 2, 1. It is the Nehru-Liaquat agreement between the two prime ministers of the newly formed countries. Delhi Pact was signed as a bilateral agreement to protect the interests of the minorities on both the sides. कि उनके हम interest, उनकी property, etc. हम protect करेंगे to the best of our abilities. Just give me one moment, folks. Yeah, sorry, important call था. Nehru-Liaquat agreement is the right answer. Let's see who all got this right. काफी लोगों ने तुक्का मारा है. Priyanshi is saying, I would like to thank Salik sir for most questions. चलो अच्छी बात है. Karthikeya is thanking web series Freedom at Midnight. Okay. Yeah. So the leaderboard sees a few shuffles, but pretty much the same people. So we'll move ahead to the 10th question coming up for you all in 3, 2, 1. Let's go. Only 9 people got this right. It was first explicitly propounded or founded or discussed or made or conceptualized by this person called Sir Syed Ahmad Khan, not Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah आगे चल के propagated it, supported it, but it was first propounded by Sir Syed Ahmad Khan. Tough question था, but ठीक है,
थोड़े तो टफ क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन इजी पीजी थोड़ी ना होंगे. Okay, Shakespeare had the fastest response. Ashim, Priyanshi, Phoenix, and Shakespeare on the first four. Then we have Snippety, Aradhya, Ted, Generalismo, Chandralekha, and Karthikeya. Let's go to the next question. Question number 11 out of 16 coming up. Now. That is correct. It's the launch of the Quit India movement, August 1942. It happened in the August Kranti Maidan. महात्मा गांधी ने अनाउंस किया यहाँ से the Quit India movement. The launch of the Quit India movement is the right answer. Interesting. Pretty much the same leaderboard. Aradhya climbed a spot with the fastest response, and all of you closed, inching closer towards the first position. That's nice. Question number 12. Let's go to question number 12 out of 16. Last 4-5 questions left. It is Surya Sen. That's correct. Surya Sen was a freedom fighter who led the Chittagong Armory Raid 1930. Chittagong, I believe, is in present day Bangladesh. Okay, Ashim, Priyanshi, Phoenix, Snippety, Aradhya, Shakespeare, Ted, Generalismo, Karthik, and Chandralekha on the leaderboard. Snippety had the fastest response. Okay, next question coming up in 3, 2, 1. Let's go. Burma is the right answer. Burma, which is currently known as Myanmar, was the first province to be separated from India by the British in 1937. And this change came through the Government of India Act of 1935, जो आप लोगों ने काफी बार सुना होगा. It forms the crux of our Indian Constitution as well. And this got implemented in 1937, although order was made in 1935. Nice, यार आप लोग तैयारी वैयारी करके आए हो, बढ़िया है. Smart people. Okay, no changes in the leaderboard. Siddhi made an entry to the leaderboard. Let's go to the third last question of the day. 36 players playing with us. 14th question. Here we go. Hyderabad is the right answer. It was the last princely state to join the Indian Union during the time of the independence, process which was carried out. अगर आपसे वैसे पूछा जाए, like after independence, which princely state or which kingdom joined rather, then the answer would be Sikkim in 1974, I believe. क्योंकि सिक्किम ने काफी लेट ज्वाइन किया था इंडियन यूनियन. बट ठीक है, उस टाइम की बात करें तो इन चार में से हैदराबाद वाज द वन विच जॉइंड इन एट लास्ट. हैदराबाद के निज़ाम साहब जो है मान नहीं रहे थे. फिर हमारे जो आयरन मैन है, क्या है उनका नाम, जो है उन्होंने थोड़ा सा उनसे प्यार से जरा से बातचीत करी कि देखो मान जाओ वरना देख लो, मर्जी है आपकी. तो जल्दी से उनको एक शाउट आउट दे देते हैं इन द चैट बॉक्स, जिनके नाम पे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना है गुजरात में. व्हाट इज दैट लेजेंड्स नेम? क्विकली मुझे बता दो इन द चैट बॉक्स. Sardar Vallabhbhai Patel is the right answer. Legend of a person. Okay. Let's look at the leaderboard. Okay, no changes, not many changes in the leaderboard. Shakespeare had the fastest response.
The positions pretty much remain the same, and we are down to the second last question of the quiz. Question number 15. हारे मुझे पता है वेद मेरी एलेट की क्लास है, आई नो, मैंने ही तो लेनी है. राम सिंह ठाकुरी इज द पर्सन बिहाइंड कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा. सो काफी लोगों को पता होता है नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है एंड हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा है, बट ये काफी लोगों को नहीं पता होता कि कदम कदम बढ़ाए जा किसने लिखा है. तो फॉर दैट दिस क्वेश्चन, राम सिंह ठाकुरी wrote this anthem for the Indian National Army. Okay. ठीक है. Just a couple of changes in the leaderboard, pretty much the same though. Last question, question number 16. Let's go to the last question of the Independence Day quiz. On your screen now. The right answer is Satyendranath Tagore. ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, आई थिंक बड़े भाई थे, and he was the first Indian to qualify for the Indian Civil Service Examination. That's the right answer, Satyendranath Tagore. And with that, we come to the end of the Independence Day quiz. Let's see who's the winner. I think Ashim takes this one again. Fantastic performance throughout. So congratulations, Ashim. Well played, and very well played. Other people on the leaderboard: Priyanshi, Phoenix, Snippety, Aradhya, Shakespeare, Kartikeya, Ted, Friendly Neighborhood, Kushagra, Siddhi, and that weird odd Chang wala name made an appearance काफी बार. So yeah, very well played, guys. Everyone who participated. I hope this was fun. थोड़ा मैंने mix and match रखे थे questions, थोड़े easy, थोड़े moderate, एक दो difficult भी. But I hope कि आप लोगों को क्विज में मजा आया. How was the quiz? Aradhya is saying इतनी गंदी क्विज कभी नहीं गई. देखो, the best quizzes are the ones जिसमें आप बेटर परफॉर्म नहीं करते. इसका मतलब आपने बहुत कुछ सीखा आज की क्विज से. Yeah, journalism with Chiang Kai-shek. What a name. Shruti got the 13th place. Well done. Karthik is saying only 2 finishes on the leaderboard have been on 7th. So thala for a reason. Good for you. All right. I hope quiz में मजा आया आप लोगों को. इंडिपेंडेंस डे स्पेशल क्विज हो गई हमारी. अब नेक्स्ट हम वापस कंटिन्यू करेंगे अपने करंट अफेयर्स के साथ ऑन ट्यूसडे. सो करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जून is the theme for Tuesday's quiz. Please come prepared. Shruti is saying Desh Rangila. Full credit for the name, for the Deshbhakt name. Desh Rangila. Okay. ठीक है. Leader of nationalists during Chinese civil war against Mao. Okay, that's interesting trivia. Good to know that. चलो बढ़िया है. Phoenix is saying Priyanshi, I tried so hard to overtake you. You guys are just bit different. अरे ऐसा कुछ नहीं है. तो हार जीत लगी रहती है, ऊपर नीचे लगा रहता है. What's important is you guys learn from every quiz. ठीक है. चलो 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं. 9 बजे मिलते हैं हम अपने एलेट वाले सेशन के लिए. ऑल्दो 8:45 तक स्केड्यूल था. आशिम इज सेइंग सर याद तो होना, 2 बार जीता ही नहीं तो. अरे बिल्कुल याद हो भाई, ऐसे कैसे भूल जाएंगे. मल्टीपल टाइम्स चैंपियन ऑफ आवर क्विज. प्रियांशी सिंह अगला क्विज एनवायरमेंट समिट्स, यूनेस्को हेरिटेज, जीआई, रामसर वगैरह पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. बट पहले जो है जून के करंट अफेयर्स और जुलाई के करंट अफेयर्स कर लेते हैं, सो दैट वी हैव लाइक कंप्लीटली फिनिश दैट सीरीज. और उसके बाद फिर हम ये थीमेटिक वाले क्विजेस फिर से स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, चलो मस्त है. मिलते हैं 9 बजे दूसरे वाले लिंक पे, विच इज एलेट वाला सेशन. मैं उसका टाइम 9 बजे कर देता हूँ. एंड प्लीज एवरीवन ज्वाइन. आधे घंटे का ही रखेंगे. विल कीप इट शॉर्ट, क्रिस्प एंड कंसाइज. आप लोग के जो डाउट्स हैं मैं आंसर कर दूंगा. एंड बस जाएंगे, कल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और वीकेंड मनाएंगे, मस्ती करेंगे. चलो बाय बाय, सी यू इन 5 minutes.